Hello, good evening, friends. Welcome back to Vocab by Heart by Tarun Swami. This is a revision video. What we learned in afternoon, that martyrdom of Abhimanyu. Right? Let's reiterate quickly in a GIF. GIF is like in a GIF. We will reiterate all the words. It's a good word that in a GIF, right? It has been asked as a phrase in paper as well to do something in a GIF. That means to be very quickly in a GIF, right? And try to use the words like in a GIF, right? Okay, so let's reiterate the words. Let's see how many words we have learned and how many words we have by hearted. Okay, as you all know, like it's a story of Mahabharata, and it's the story of Abhimanyu, who is the protagonist of our story. Protagonist is a word जो कि पेपर में पूछा गया है, right? आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन CDS, NDA, SSC, आपके बैंकिंग में दो there is no direct vocab question, but yes you face problem in close test as well. ये उनके लिए भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी, right? So लेट्स रिआइटरेट. आप सभी जानते हैं कि जो महाभारत है उसके अंदर कौरव पांडव वैसे तो एक दूसरे के भाई थे, और इस वीडियो के अंदर एक बार और रुकूंगा. इस वीडियो के अंदर मैं आपको वर्ड्स का जो है प्रॉपर यूसेज भी बताऊंगा, सो दैट आपके पेपर में जो क्लोज टेस्ट आता है या फिल इन द ब्लैंक्स आता है उसके अंदर इट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट? So I'll try to use them in sentences. So keep on listening and give your ears, please. Right? Okay. So let's start. As you all know that Kaurav and Pandavas वो वैसे तो एक दूसरे के भाई थे, but because of Duryodhan's greed for throne, right? They turned into foe, right? They became foe. वो एक दूसरे के फोई बन चुके थे. And जब महाभारत का युद्ध चालू हुआ तब जो कौरव्स थे they were unable to conquer Pandavas, right? So यह देखकर जब पांडव्स उनके कौरव सेना के बहुत सारे योद्धाओं को स्ले कर चुके थे, दे हैव स्लेड सो मैनी व्हाट यू कॉल सोल्जर्स एंड द समुराइज ऑफ कौरव सेना आर्मी. सो दुर्योधन वॉज ऑन टेंटर हॉक्स एंड ही वेंट टू हिज प्रधान सेनापति, दैट इज गुरु द्रोण एट दैट टाइम. ही वेंट टू हिम एंड आस्क्ड हिम दैट हे गुरु द्रोण आप कुछ करें. तो he suggested him that okay, I will not kill Pandavas, but I can do a favor that अगर हम युधिष्ठिर को कैप्टिवेट कर लेते, if we captivate युधिष्ठिर, then Pandavas will lose the battle. And Duryodhan he got very ecstatic to hear this proposal. वह यह proposal सुनकर बहुत ही ecstatic हुआ, बहुत ही खुश हुआ, and he agreed that okay. अब यह मैंने इसको इंट्रीग क्यों कहा था? इंट्रीग इसलिए था बिकॉज उनको पता था कि जो चक्रव्यूह है इसको केवल और केवल अर्जुन ही भेज सकता है पांडवों में से. उस पूरे व्हाट यू कॉल द्वापर युग के अंदर इट वाज कृष्ण, इट वाज अर्जुन, इट वाज भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, राइट? ओनली दीज 7 वॉरियर्स, कर्ण, who could penetrate Chakravyuh, right? So they played a trick. उन्होंने अब क्या करा कि एक what you call एक योद्धा था, उसको कहा कि तुम अर्जुन को कहीं दूर डिस्टेंट प्लेस पे ले जाना. So it was an intrigue, right? So they formed an intrigue and इसके अंदर जो अबेट किया, that was it was abetted by Jayadratha, who got the boon from Mahadev that for one day no Pandav can conquer Jayadratha, right? He got this what you call boon from Mahadev. So they what you call planned the intrigue, and then very next day when the battle started, the samurai he engaged Arjun with him and took him to the distant place from the battleground. And after that, Guru Dron he just blew the conch for Chakravyuh, and after hearing the what you call sound of conch, Yudhishthir became very anxious because, as I told you, nobody was aware how to penetrate Chakravyuh except Arjun. Now the protagonist of our story, Abhimanyu, he came to the scene and he just beseeched his ताउश्री. beseech, उसने अपने ताउश्री से beseech की, प्रार्थना करी कि हे ताउश्री, मुझे आप इस चक्रव्यूह को
पेनिट्रेट करने की आज्ञा दे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अभिमन्यु था, ही वॉज ऑफ 16 years age, but still he was very intrepid, he was very stalwart. You can just imagine that a 16-year-old boy asking his Tao that okay, just allow me to penetrate. And when he knew that yes, all the, you know, what you call big dexterous soldiers are there, right? Okay, so he just besieged his Tao that okay, just allow me to penetrate. And he said okay, but I don't know how to come out of it. He said no worries bro. He said don't worry, I we all will just protect you, we will be there. But as soon as Abhimanyu entered Chakravyuh, Jayadratha, who was abetting Duryodhan, he just debarred all the Pandavas on the entry point of Chakravyuh, and Abhimanyu, he left alone with all the great samurais, Apaches, soldiers, right? Now, when he was the Shishya, he was the pupil of Krishna, Krishna edified Abhimanyu. So he was very brave, he was stalwart, right? And he was even dexterous in war skills. वह बहुत ही डेक्स्टर्स था वॉर स्किल्स के अंदर, निपुण। अब लेकिन इतने जो महान योद्धा थे उनके सामने वो एक 16 साल का बच्चा कैसे टिक पाता। तभी जब वह सारे एक एक करके उससे पहले लड़ रहे थे, एक एक करके, तब वह उसको हरा नहीं पा रहे थे। तभी दुर्योधन ने कहा कि लेट्स गेट टुगेदर एंड अटैक दिस लिटिल बॉय। अब जब ऐसा हुआ तब अभिमन्यु को बहुत ही, he was totally startled to see that this is against war ethics. He was very much startled. Startled is a new word that is the meaning is get what we call shocked. He was shocked to see, he was startled to see that all the great warriors, they are breaking the war ethics. अब वह कहता है कि आप सभी कितने डेस्टर्ड्स हो, आप सभी कितने डेस्टर्ड हो, यू ऑल आर वेरी डेस्टर्ड। डेस्टर्ड इज कावर्ड, दैट आप एक बालक के ऊपर आप सभी मिलकर वॉर कर रहे हैं और आप ये युद्ध के एथिक्स के खिलाफ है। दुर्योधन एक नहीं सुनता है। अब एक तीर लगता है अभिमन्यु के रथ के अंदर, अभिमन्यु नीचे गिर जाता है, उसके बहुत सारे वुंड्स भी हो चुके थे। मैनी arrows penetrated his what do we call